Kunja Vihari Jaya Ram Kunja Vihari Harinam Sankirtan Yat Ki Jai Srila Prabhupada Ki Jai Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, Mataji. Sorry, I was in a phone call. Thank you, Mataji. Thank you, Prabhuji. Thank you. So, Hare Krishna, devotees. So, thank you for joining us in our evening session for Bhagavad Gita. We'll begin our session. 1 second. Samir, give me the table lamp. Quick, double march. Jaldi le aao. Hare Krishna. Sorry, I can't see. So we'll begin the class. Namo Vishnu Padaya Krishna Prishthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Dev Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashat Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram. Bring. I can't see otherwise. Thank you. Hare Krishna. So we had a break yesterday, and it was another unpleasant surprise to hear about Maharaj's health, and we're all praying, and I think tomorrow is a very special Ekadasi, Sayan Ekadashi, because now Chaturmas will start from the next day. So this Ekadashi has many benedictions, and so that is our request to all of you that please do the sankalp that what before today, that whatever I do on Ekadashi I offered, and we are doing this to for praying for the health of His Holiness Bhakti Charan Maharaj, so he can recover fast. In Delhi Temple also, today Gopal Krishna Maharaj secretary told me at Delhi Temple also they are having daily morning and evening kirtan for Guru Maharaj, and our Gurugram also we had temple kirtan going on today, and from Krishna Balram Temple, Vrindavan also, Saran Thakur Prabhu did a very long kirtan, and they did a yagya from 5 to 4:30 to 6 o'clock. So all over the world they are doing prayers and yagya. Today also yagya done at Srirangam Temple also. At, I think all major temples in India and Nepal, they're doing prayers. So we are very small fly. So whatever we can do, we pray. जो कल की एकादशी का है, so that those who feel in their heart that they should pray for Maharaj can sankalp, today, so that whatever we do tomorrow, and then day after when we break, then we offer again like this. So thank you so much. So we have our verses. We'll begin from where we left. We were at 2.40 and 2.41. We just touched 2.40. So please raise your hands, those who want to read 2.40 and 2.41, and then we'll begin. No one raising hand? Okay, Shashank Chitan. Okay, and Rani Prabhu, and Ashram Mataji and Mamta Master. Okay, Mamta Shah. Sorry, that's missing. Okay, so Shashank Chaitanya Prabhu, please go ahead. 2.40. Just a minute.
Hare Krishna. Yes, Prabhu. Yes, Prabhu. Can you hear me? Hare Krishna. Hare Krishna, Babu. Yes, Prabhu. Neha vikarma naso asti pratyavayo na vidyate sab alpam ape asya dharmasya trayate mahato bhayat. Thank you, Prabhu. Thank you. Okay, now next is Asha Mataji or Ashok Prabhu. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna. नेहा विक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्. Thank you, Mataji. Now, Ronnie Prabhu and Mamta Mataji, you do 2.41. So first you do Ronnie Prabhu, 2.41. Okay, Prabhuji, Hare Krishna. 2.41. Vyavasatmika buddhir ekeha kurunandana bahusakha he anantascha buddhayo anvayasayinam. Thank you, Prabhu. Yes, Mamta Mataji. हरे कृष्णा प्रभु जी. व्यवसाया आत्मिका बुद्धिर एका कुरु नंदन बहुशाखा हे अनंतस्य च बुद्धियो व्यवसायी नाम. Thank you, Mataji. Thank you so much. So we'll read 2.40 first. Neha vikarma nasho asti pratyavayo na vidyate swa alpam apyasya dharmasya trayate mahato bhayat. Na, there is not iha in this yoga, abhikrama in endeavoring, nasha loss, asti there is, pratyavaya diminution, na never, vidyate there is, sualpam a little, api although, asya of this, dharmasya occupation, trayate releases, mahata from very great, bhaya danger. Translation and prepared by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. In this endeavor, there is no diminution, there is no loss or diminution, and a little advancement on this path can protect one from the most dangerous type of fear. Who remembers what did we discuss? What is the most dangerous type of fear? Did we discuss yesterday? What is that most dangerous type of fear being discussed in this shloka? Yes, Mamta Mataji? हरे कृष्णा प्रभु जी. Thank you. प्रभु जी प्लीज रिपीट द क्वेश्चन. आई एम सॉरी. I'm saying जो हमने ट्रांसलेशन में पढ़ा हमने इसके श्लोक के जिसमें लिखा हुआ है कि in this endeavor there is no loss of diminution and a little advancement on this path can protect one from the most dangerous type of fear. So what is that most dangerous type of fear? गेटिंग डिग्रेडेड मतलब नीचे गिर जाना. Yes, thank you, Mata. Yes, कि नीचे की योनियों में गिर जाना. Thank you, Mata. So we'll read the purport. Activity in Krishna consciousness or acting for the benefit of Krishna without expectation of sense gratification is the highest transcendental quality of work. Even a small beginning of such activity finds no impediment, nor can that small beginning be lost at any stage. Any work begun on the material plane has to be completed, otherwise the whole attempt becomes a failure. But any work begun in Krishna consciousness has a permanent effect, even though not finished. Who remembers what examples we took yesterday and how we see कि Krishna consciousness में जो भी कार्य किया उसका फल रहता है, और अगर हम किसी और तरह से कार्य करते हैं, so वो जो है it is not permanent. अगर हम शुरू करते हैं और अगर वो पूरा नहीं होता है, so then it is futile, or it says it becomes a failure. Okay. Yes, Sudhir Prabhu. हरे कृष्ण प्रभु जी.
कल प्रभु जी हमने यहाँ एग्जाम्पल लिया था कि जैसे इस बर्थ में हम इंजीनियर हैं, कंप्यूटर इंजीनियर हैं या डॉक्टर हैं या जो कुछ भी हैं, नेक्स्ट बर्थ पे हमें नहीं पता कि हम वो होंगे या नहीं होंगे, होंगे तो क्या होंगे, वो हमारे साथ कुछ नहीं जाना है। लेकिन हम जो जितनी यहाँ पे भगवान की भक्ति करेंगे वो हमारे साथ जाएगी। अगर हमने यहाँ 10% की है तो अगले जन्म में वो 10% से आगे शुरू होएगी, वो दोबारा 1 से शुरू नहीं है। ये एग्जाम्पल हमने कर लिया। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सुधीर प्रभु। एनीबडी एल्स रिमेंबर एनी अदर एग्जांपल जो हमने कल डिस्कस किया हो? Nobody remembers? हमने 2-3 एग्जांपल और भी डिस्कस किए थे। यस शशि माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने ये योगियों के बारे में भी बताया था जो अष्टांग योग और सब करते हैं, मतलब एक स्टेप से अगले स्टेप तक वो जाते हैं, लेकिन अगर वो पूरा अपना जो भी है कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो वो उनका बेकार हो जाता है। और कृष्णा कॉन्शियसनेस में जैसे कि प्रभु जी ने कहा कि हम जो भी करते हैं वो हमारे साथ कैरी होता है नेक्स्ट। यस, तो ये हरे जैसे कृष्ण। थैंक यू माता जी। जैसे माता जी ने बताया कि जो योगी हैं अगर वो पूरा अपना एक उसमें एक जन्म में फिनिश नहीं कर पाते हैं, so then they have to next में they have to again start from zero. So it is very important कि for a yogi, इसीलिए हमने देखा था कि जो योगी हैं जो 8 स्टेप्स हैं अष्टांग योग के, यम, नियम, आसन, then pranayam, then pratyahar, then dharana, then dhyan, and then samadhi. So if you don't reach samadhi and this lifetime, the next lifetime it's all gone, failure. और इसी तरह से जो ज्ञानी है, अगर जो उपनिषद पढ़ रहे हैं और जो ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, if they can't finish in this lifetime, then अगला जो जन्म है उसमें they will restart. That all knowledge they got from Upanishad gone. But भक्ति योग ऐसा है कि आप जब भी हम जहाँ तक भी फिनिश करते हैं, जैसे सुधीर प्रभु ने बोला 10% किया तो 10% के बाद शुरू होगा, 50 किया तो 50 शुरू होगा। So इस तरह से रहता है। Yes, आशा माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक क्लैरिफिकेशन है। जैसे आप कह रहे हैं कि हम भक्ति योग में जो करते हैं वो नेक्स्ट लाइफ में फिर उससे नेक्स्ट स्टार्ट होता है, नेक्स्ट में लाइक 10% है तो 10.1 में 1 से स्टार्ट होगा। तो जैसे प्रभु जी कई बार हम लाइक देयर इज ए पर्सन लाइक माई सेल्फ इज प्रैक्टिसिंग समथिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड इफ आई लीव माई बॉडी इन स्लीप and my consciousness is not that ki matlab I was remembering Krishna, so what will be my matlab next birth? Would it be human being or would it be the consciousness which I was dreaming in or sleeping in? How do we understand Prabhuji this thing? मुझे अगर आपने अंत नारायण स्मृति, अगर अंत के समय में if you remember Krishna or Narayan or Vishnu, then there is no longer birth. फिर तो सारी स्टोरी खत्म हो गई। अगर अंत समय में भगवान की स्मृति आ गई, then whole story is finished, you know, because then you go back to Godhead. और भक्त की क्या स्थिति होती है वो बताया है, वो कल मीनाक्षी माता जी ने एक वर्स बताया था। So those वर्स हैं 6.41 और 6.42। खोलिए 6.41 ट्रांसलेशन पढ़िए और 6.42 की भी ट्रांसलेशन पढ़िए। एक सेकंड। हरे कृष्ण प्रभु जी, ट्रांसलेशन पढ़ रहा हूँ 6.41। The unsuccessful yogi and many years थोड़ा जोर से पढ़िए प्रभु जी, या माइक के पास आइए। The unsuccessful yogi after many years of enjoyment on the planets of the pious living entities is born into a family of virtuous people or into a family of rich aristocracy. Then 6.42, or if unsuccessful after long practice of yoga, he takes his birth in a family
of transcendentalists who are surely great in wisdom. Certainly such a birth is rare in this world. So does it answer your question? प्रभु जी आंसर दे रहा है, बट जैसे हम उसका जड़ भरत महाराज जी का एग्जांपल देखते हैं, वो भाव की स्टेज में थे, जब वो मेडिटेट कर रहे थे, बट उनकी अटैचमेंट डियर से हो जाती है, तो नेक्स्ट बार उनको डियर का मिलता है. Correct. हम ये तो इसको कैसे समझे? मतलब दो ही वाज एट भाव मूड, उनका भी तो मतलब ही कुड हैव गॉन स्ट्रेट टू दी मतलब भगवान धाम. Why should he go to Bhagavad Dham when he's not attached or he didn't think about Krishna at the time of death? हाँ, yes प्रभु जी. And same way my question is like, if I'm sleep, I leave my body in sleep mode. So then what is It doesn't matter. You leave in the sleep mode or unconsciousness. कि भागवतम में श्लोक आता है और ये मुकुंदमाला स्तोत्र में अंदर भी ये आता है कि भगवान बताते हैं कि अगर आपने सारी उम्र भगवान का नाम लिया है और लास्ट के जो मोमेंट्स हैं वो जो one becomes subconscious, unconscious, then it is written कि then Lord remembers us. अगर सारा उम्र हमारा जो है तेषाम सतता युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम इसमें निकला है, then the Lord thinks about us. It is not a mechanical process. See, Ashtanga Yoga is a mechanical process. ये किया तो ये होगा, ये नहीं हुआ. It's a mechanical process. But जो भक्ति योग है, it is not a mechanical process. It's a matter of heart. So it doesn't matter what we for a mature devotee, what was his consciousness at the time of death. या sleep में death हो गई, या क्या हुआ. So like that. So then Lord remembers. This is no problem. So, but we will get as per the 6.41 and 42, depending upon हमने कितनी भक्ति की है. अगर थोड़ी भक्ति की है तो किसी बिजनेसमैन के यहाँ या ऐसे जहाँ होगा जहाँ पर हमें इतनी स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी डे टू डे लाइफ को मैनेज करने के लिए, so we can start our भक्ति from there. और अगर भक्ति काफी टाइम तक की है, then one is born, जो उनका जन्म है वो किसी भक्त के घर में होता है, फिर वहां से वो अपनी भक्ति बड़ी सरलता से आगे बढ़ा सकते हैं. तो प्रभु जी आप कह रहे हैं कि नेक्स्ट बर्थ ह्यूमन फॉर्म मतलब ह्यूमन बॉडी इज श्योर, मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ, प्रभुपाद कह रहे हैं इसी के तात्पर्य में. हाँ, बट प्रभु जी फिर जड़ भरत महाराज जी को, मतलब वही मेरा क्वेश्चन है कि उनको हिरण की उनको क्यों जड़ भरत है. सो ही इज ए, देखिए जो भगवान के जो इतने क्या कह सकते हैं जो पवित्र भक्त है, दे आर बीइंग यूज्ड फॉर बाय कृष्णा टू टीच अस समथिंग. तो वो बताते, जैसे ऐसे अब बोले भीष्म का है ना, तो ये जो भक्त हैं जो उत्तम श्रेणी के भक्त हैं, इनके जो है दे आर मोर लाइक पास टाइम्स, दे आर नॉट लाइक दिस, है ना. सो they become Krishna. He uses everybody as a nimitta. Nimitta means instrument. So an instrument is being made. Okay, कि अगर आप अपनी भक्ति करते हैं तो ध्यान से करिए, don't get attached anywhere, because अगर आप कहीं भी हल्का सा attachment हो गए तो आप फिसल जाएंगे. Like this. So they become like an example to us कि one should be, जो अगला वर्ष आएगा, व्यवसायिका बुद्धि, और so one pointed we should be focused on Krishna, because वो क्या बोलते हैं, जैसे रोड्स पे लिखा होता है हिल स्टेशन में, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, like that. So he doesn't use us, he uses his pure devotees just to make an example, because for them there is no problem. और वो देखिए जब वो हिरण के भी उनका देखिए जब वो हिरण के भी जब वो शरीर में आए, he had memory of his previous birth. Yes. और वो जाके ऋषि मुनियों को सुनते थे. So do you think he is an ordinary person? Not like that. थैंक यू प्रभु जी. हरे कृष्ण. इसी तरह से धाम की भी होता है कि धाम में अपराध करते हैं, so then you are born as a animal in the dham, but in the next birth you are gone. So they are special cases. ठीक है प्रभु जी. Yes प्रभु जी, thank you so much. अंकिता माता जी, you have a question? No, Prabhuji, no question. Actually, I had asked this same question to Chaitanya Charan Prabhu in one of the sessions. So he had also replied in a similar manner. Plus, he had said that by falling down, he means the consciousness doesn't fall down to animal species, like what you said. So he also gave example of a few animals. I think in Malaysia, there's a crocodile or
I don't remember exactly, a crocodile or a dog who they don't eat non-vegetarian food, and they just take prasad. They stay nearby the temple, and there are a lot of people who come to just look at those animals. So their consciousness is like that. So even if anyone falls down to the animal species, the consciousness does not go away. So just wanted to say Very that. nice. Yes. Thank you, Mataji. Yes, very nice. So, आगे बढ़ते हैं. कहाँ चला गया मैं? But any work begun in Krishna consciousness has a permanent effect, even though not finished. The performer of such work is therefore not at a loss, even if his work in Krishna consciousness is incomplete. 1% done in Krishna consciousness bears permanent result, so that the next beginning is from the point of 2%, whereas in the material activity, without a 100% success, there is no profit. Why is like that? Who will answer? ऐसा क्यों है कि भक्ति में किया तो परमानेंट है और अगर नहीं किया तो वो फेलियर है या टेम्परेरी है? ऐसा क्यों है? Who will answer? Raise your hands. Is it Ashok Prabhu? Who has raised the hand? हाथ ही नीचे कर लिया. पुराना वाला खड़ा हूँ. So क्यों है ऐसा कि जो हम कहते हैं हमारा जो पाथ है वो तो बहुत बढ़िया है, इस पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जो दूसरे मार्ग है उसमें सब बुराई बुराई है. हमारा माल जो है बहुत अच्छा है और बाकियों का माल खराब है. ऐसा क्यों है? मीनाक्षी माता जी. हरे कृष्ण प्रभु जी. प्रभु जी कहीं ना बाकी सारे जिस भी पाठ में है वहीं कहीं ना कहीं there is a something sense gratification or not for the pleasure of Krishna. So that's why they are that's what come into my mind. Ki somehow they just want, if you talk about liberation, they want to get rid of this body, or for their own pleasure or their for own understanding they are doing. But the bhakti is devotional service is a thing where we do everything for the pleasure of Krishna. So that's why that is my understanding, Guruji, for this one. Or who will tell? Yes, Ruchi Mataji. Hare Krishna, Prabhuji. Because Prabhuji, whatever we do here is temporary, because this world is temporary, so we do not take it further. It finishes off here only in terms of material activity. Whereas bhakti, when we do bhakti, it's always carried forward. Okay, but why? That is my question. Why it is carried forward? Why other things are not? Because that is our constitutional position to serve Krishna, to do bhakti. We, as a soul, as a jiva, we have been doing that, and we have fallen from there. So that is the place where we have to go back, and that is what we are supposed to do. Okay. Ruchi Mataji has given 70% of the answer. Only 30% is left. So I am looking at little. She is right, Mataji, what she all said. But like I said, 70%, 30% reh gaya bas. Yes, Neha Kumar Mataji. Hare Krishna, Prabhuji. I'm just attempting an answer. I think because bhakti or pure devotional service is done for the pleasure of Krishna, it changes the quality of our desires and also the consciousness that comes with it. So, which is not the case in like material activities. It doesn't affect the quality as we talk about the desires. Hare Krishna. Okay. Hare Krishna. It is the right answer, but not the answer which I am looking. It's very simple. I'm saying why those activities are not carried, why this one is carried. You know. Yes, Ashok Prabhu. Hare Krishna, Prabhuji. Can we say bhakti is eternal? Because but why? That is my question. Why? Why bhakti is eternal, others are not eternal? That is my question. Because it is not from this part of this material world. It is coming from the spiritual world. Or other things?
other thing like material words, like whatever we have, everything vanishes. With time, everything will vanish. Nothing goes with us when we leave this body. Only our devotional services go further. Okay, Ashok Prabhu has taken the 70% to 90%. सिर्फ 10% का बट्टा पालना रह गया है. He's right, but he has not spoken those words I am looking. Yes, Kamal Prabhu. हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम. प्रभु जी, जैसे सोल का जो नेचर है वो प्रभु जी कृष्ण के जो नित्य दास हैं उस फॉर्म में है कि जैसे सोल का जो नेचर है इट इज फॉर्म ऑफ द नित्य दास ऑफ द कृष्णा. तो प्रभु जी जो इसलिए प्रभु जी जो मेटेरियलिस्टिक हैं उसके अंदर. Okay. Yes, but not the sharp answer I am looking. Ronnie Prabhu? Prabhu, because these activities are above the modes of nature and they are transcendental and they are Sachidanand, so they're eternal. So they eternally bear the results. Or कैसे बोलोगे? So you have taken the 90 to further 95. But I am saying, what is temporary? Is the body. Sat versus asat. No, body. It is body versus soul. So जो भी हम कार्य कर रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं, they're all related to our body. If I'm an engineer, I'm a software, I'm this. It's all related to my material body. Correct? Whereas bhakti is the only one which is connected with the soul. So what is connected with the soul, you carry, and what is carried with the material thing is not carried. You're bound with the like many of you said, the right answer, bound with the karmas, bound with the modes, or जिन्होंने दूसरा बोला. But main thing, simple thing to understand is what is sat is the soul, और असत क्या है? शरीर. Also सूक्ष्म शरीर also is asat, like this. So जो भी हम कर रहे हैं material, because जब ज्ञानियों का भी है, is more to do with negation of material. They have no understanding of spiritual. उनको आध्यात्मिक की knowledge नहीं है, but उनको ये मालूम है कि ये जो सारा संसार है, क्या बोलते हैं वो, जगत सत्य, ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, like that. So which means they have understanding कि this is myth, but they don't understand. They don't have any knowledge about the spiritual part. So they are in the neti, not this, yes, but still not. Or similarly Ashtanga Yogi, if you don't finish, और अगर आप वो यम नियम, आसन, प्राणायाम इन्हीं पे रह गए और आगे नहीं गए, then it is finished, because no connection with the super soul. So all these things. और दूसरा, अगर चाहे इस बार मैं सुप्रीम कोर्ट का जज हूँ, या बड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, या किसी कंपनी का मालिक हूँ, या करोड़पति हूँ, अगले में क्या बनना है कोई अता पता नहीं. Nothing will take. ना ये शरीर भी हमारे साथ नहीं जाता है, और सारा बैंक बैलेंस, बच्चे, माता पिता, husband, wife, all left here. Nothing goes. Everything is left here. And you start again based upon so many previous desires and so many previous qualifications. Based upon what we deserve and desire, we are carried forward by the three modes of material nature takes us forward. Like that. So जो हमने किया उसका कोई गारंटी नहीं है. और जो भक्ति का है, that is taken because it is the dharma. जैसे आप लोगों ने बोला भाई कि जी मेरे स्वरूप होए नित्य कृष्णदास, is the स्वरूप of the soul to be the servant of the भगवान. Yes, तो इसलिए क्योंकि वो they are giving us permanent what do you call effect, not temporary. Only एक शर्त होती है, वो क्या, कौन बताएगा ये, कि आपकी भक्ति तो अगले में शुरू हो जाएगी, बट उसकी शर्त एक है. भक्ति शुरू होगी जब भी अगले जन्म में जहां से छोड़ी वहां से शुरू होगी, पर उसके लिए एक there is something needs to happen, then only it does. Desire. Surrender. There is something needs to happen, then only it starts. So इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं कि then why wait for, अगर आपको पता चल गया कि मुझे भक्ति ही करनी है, then why dilute it and think of 5%, 10%, do it 10% and go back, finish the job.
Because if the second thing, if that thing doesn't happen, then it will not start. What is that thing to happen? Mercy of Guru. Yes, okay. Okay. I don't know why on the chat, Ronnie, why everything comes so big? Oh, So- okay. Okay. So, chat में there are so many people have written. 6 पहले के होंगे. Siddhamata is saying is the condemnations of Kapil Muni who was Ansh of our Lord. I don't know Mataji. हाँ, इसका जो आंसर है ये रॉनी प्रभु ने लिखा है. देखिए, very good रॉनी प्रभु. इसका आंसर है that one has to come in touch with devotees. You have to come. हमें भक्तों के संग मिलना चाहिए. अब भक्तों का संग नहीं मिला तो फिर उस जन्म में नहीं होगा. वो है तो आपके पास पूरा. वो आपके पास अगर 10% किया है, वो 10% पूरा है. बट आप भक्तों के संग में नहीं आए तो वो एनगैश नहीं हो सकता. So you have to come in the association of devotees, and then it starts. You know. So that is why we should not take those risks. So इसलिए प्रभुपाद बार-बार बोलते थे कि जब आपको पता चल गया कि this is what it is, then please make full use of it. और यही ट्राई करिए अपनी तरफ से कि हम इसी जन्म के बाद हम शरीर छोड़ने के बाद हम भगवान के धाम चले. Work in such a manner. आगे पढ़ते हैं. अजामिल अब इसका वो दे रहे हैं, प्रमाण दे रहे हैं शास्त्रों से प्रभुपाद. Ajamil performed his duty in some percentage of Krishna consciousness, but the result he enjoyed at the end was 100% by the grace of the Lord. So Ajamil का क्या हुआ था कि he was a Brahmin who was in right consciousness. Then he saw a prostitute with a man, and then he got entangled. He had desires to enjoy similar, and then he moved on with a prostitute and spoiled his own Krishna consciousness. But by the arrangement of the Lord, उन्होंने अपना जो पुत्र है, जो बड़े वृद्ध थे, तब उनके पुत्र का जन्म हुआ और भगवान की प्रेरणा से उन्होंने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा. और अंत समय के अंदर he remembered his son and he called Narayan. And when he called Narayan, then the Vishnu came, and then उन्होंने जो यमदूत आए थे उनको भगा दिया कि because उसने भगवान का नाम लिया है, so इनके जो जितने भी इनके जो पाप किए हैं वो सारे के सारे कट गए. पर उन्होंने बोला यमदूत ने वो तो ठीक है, पर इन्होंने भगवान का नाम नहीं लिया, इन्होंने तो अपने बच्चे का नाम लिया है. He was not remembering Narayan. So they said yes, but जो भगवान का नाम है, that itself is so powerful that itself can negate everything. So ये एग्जाम्पल दे रहे हैं कि कैसे एक जो अजामिल है उन्होंने he did some percent of Krishna consciousness, but he enjoyed the result. He enjoyed at the end was 100%. Like that. So whatever little we do for Krishna, it goes into our permanent account. Nobody can take it out. Any service done, इसीलिए भक्त जो है जो मैच्योर भक्त हैं वो दूसरे भक्तों को सेवा में लगाते हैं, और जो सिंसियर भक्त हैं वो सेवा ढूंढते हैं कि हमें कोई सेवा मिले. Because any seva done from a purely profit loss account, व्यवसाय विका बुद्धि. So if you say profit loss, so my profit and loss is spiritual benefit. So then they know I have to find for seva. Or sometimes people tell me we are so engaged in seva that we have no time for sadhana. So that is not correct. So one should do the sadhana correctly. First priority is to do the morning sadhana. इसीलिए सुबह उठना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर सुबह उठ नहीं पाते हैं तो सारा का दिन जो है वो खराब हो जाता है.
So first thing is to have our sadhana properly done, chant our 16 rounds in the morning, and then we have time for seva. Any seva, we have time to do this. Sometime, many a times, devotee tell me, Prabhuji, now because of lockdown, I have a lot of time in my hand. I am reading for 2 hours, for 3 hours, you know. But when I see for service, they are not doing any service. You know. So what is important? Is it reading important or the service important? Both are important. But rather than doing whimsically on our own thinking, I should do this, you should ask, what should I do? Because reading, there is no end. So one should always hanker for service. और वो सर्विस क्यों नहीं होती है? Again we go back to 4.34. What is the 3 words? जो है Trimurti 4.34 की. Who remembers the Trimurti? There are 3 Murti of 4.34. Who remembers all the 3 main gems of 4.34? What is the 3 critical things? Who remembers all 3? Ankita Mataji? Yes, Hare Krishna Bhakti. So, Prabhuji, it was approaching the Guru and asking questions and rendering services. इसमें से एक आपने थोड़ा सा बीच में से एक वो हो गया. अप्रोच करके क्या करना होता है माता जी? अप्रोच करने के बाद 3 चीजें करनी है माता जी. तो 3 चीजें क्या है यही मैं पूछ रहा हूँ. तो आपने अप्रोच वाला बता दिया, आपने रेंडर सर्विस बता दिया, और क्या बताया आपने? Relevant questions. पर एक बीच में माता जी आप वो खा गए माता जी. हाँ, वो आपने वर्ड ठीक बोला है. So that main thing is pranipatena. वो आपने इंग्लिश ट्रांसलेशन बोला pranipatena, but it is the pranipat means to become submissive. Pranipat means, if you read Pranipat, how Pranipat translates other verses is submission. It means submissive. So one should surrender. Okay. So ये शशांक चैतन्य प्रभु ने लिखा है कि approaching a spiritual master, rendering service and asking questions. Yes. और मेघा माता जी ने लिखा है परिप्रश्नेन submissive and seva. Yes. Yes. मेघा माता जी. And Shivani Mataji written pranipatena pariprashnena sevaya. Yes, Mataji. So what is not happening in such cases is pranipatena, because there is no submission. I am still independent. So I think what is good for me, what is not good for me. And when I think, it means where I am at the level of my mind. I'm at mental speculation level. So I'm still dependent on my mind. So that is why one should always seek guidance. What should I do? Well, and not think I will tell, and the spiritual master or the Shishya Guru or the counselor or the senior devotee in the temple will be very happy. Like that. He will be very happy because at least you are doing something good. But question is, there is a lot more to be traveled to before we become submissive. And submission doesn't come from teaching. Submission has to be caught. Bhakti is a Shakti, you have to catch it. It cannot be taught. So that you have to go through. Maybe 1 year, maybe 1 lifetime, maybe 100 lifetime. Then we will figure it out. That kabhi bhi bhakti ke andar one should always remember, bhakti means surrender. It means submission. Otherwise, Krishna इतने patient है, कोई problem नहीं है. जहाँ इतने करोड़ों जन्म लगा दिए, वो कह रहे कोई बात नहीं, कब से कब मुड़ के आया है, और थोड़े जन्म और सही, no problem, no problem. So one should always hanker for seva. Seva is what we will get blessing हमें जो है, जो उनके आशीर्वाद मिलता है वैष्णव का, उनकी कृपा मिलती है, और जो हमारे जो आचार्य हैं, भगवान हैं, वो देखते हैं कि हमारा मूड कैसा है. Then we get proper understanding of शास्त्र. शास्त्र भी नहीं पढ़ सकते हैं. परमात्मा जी बैठे हैं हृदय के अंदर. अगर आप पढ़ेंगे जो रुद्र गीता आता है भागवतम के अंदर, और अदरवाइज ऑल्सो यू विल सी, बिना परमात्मा जी की परमिशन के शिक्षा गुरु नहीं मिलता है. बिना परमात्मा जी की कृपा से दीक्षा गुरु नहीं मिलते हैं. बिकॉज दे आर ऑल मैनिफेस्टेशन ऑफ परमात्मा. विद इन चैत्य गुरु जब भगवान बनते हैं, then inside is the Chaitya Guru and outside is the Diksha Guru, Shiksha Guru. Also
also all the Shastra. That one understands Shastra only by the mercy of Paramatma Ji and our Shishya Guru and Diksha Guru. So that happens only through Seva. Because Seva means we are submissive and there is some relationship of आप किसकी सेवा करना चाहते हैं जिससे कुछ आपका संबंध है, then you want to serve, there is some love, there is some affection and you want to serve. और अगर हम अपने ही घोड़े पे सवार होकर जाना चाहते हैं तो there is no problem because उस रेस में और बड़े सारे घोड़े हैं, सैकड़ों भागते जाइए. So okay, so आगे अब अजामिल का हमने एग्जांपल पढ़ा. और कोई एग्जांपल दीजिए मुझे कोई जिसने भगवान के लिए कुछ थोड़ा सा किया हो पर मिला बहुत ज्यादा. और अच्छा, he did little for Krishna, but in the return got much. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna. Sorry, Prabhuji, can we say example of Parikshit Maharaj? Who, Parikshit Maharaj ने क्या किया? When he heard Bhagavad Katha for 7 days, he absorbed himself fully in Krishna, and at the end of the 7th day or 8th day, he goes straight to the Bhagavad Dham. Okay. And और एक एग्जांपल प्रभु जी 2.71 में है खटवंग महाराज 2. उनका भी मतलब he just focused meditated for 2-3 minutes or 5 minutes. But मेरा जो क्वेश्चन है प्रभु जी ये है कि जिसने भगवान की, जैसे अजामिल का एग्जांपल दिया कि जिसने कुछ सेवा की हो, कुछ कृष्णा कॉन्शियसनेस की हो या किसी भी तरह से भगवान की कुछ सेवा की हो, भगवान के भक्तों की, and then he or she got many things. Dinesh Prabhu. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna. I am thinking, but Okay, मैं तो फिर आपको चैट में बताया था. रचना माता जी ने एग्जांपल दिया है सुदामा का, विप्र सुदामा, और उसने थोड़ा सा नहीं किया था माता जी. So we'll discuss Sudama, but yes, it is correct example. He did little, but he didn't do little. Why he didn't do little, we will also discuss. Or then Megha Mataji Kubja, who applied Chandan and Krishna make her a tall, beautiful lady. Yes, okay, she did. Shivani Mataji, one example from Chaitanya Charitamrita. Okay, then what is the example, Mataji? Mataji is saying one example from Chaitanya Charitamrita. Hare Krishna, Prabhuji, I don't remember the exact name, but we discussed that in last session. Okay. मंद सुमंद, मेरा तो मति मंद है माता जी. अब क्या किया लास्ट सेशन में, I don't remember. माधवेंद्र पुरी. Yes, Prabhuji. किनका माता जी? माधवेंद्र पुरी में भी. उन्होंने क्या किया माता जी और क्या मिला? He was such high caliber devotee, Mataji. He didn't do little. He was a sannyasi, completely dependent on Krishna. So one example, we can see of one example हम देख सकते हैं of Putana. What did she do? She approached Krishna, कि I will kill him, but what service she did? She approached him to kill, but because he sucked her breast and took little milk, then what did Krishna saw? He didn't see that she came to poison. वो तो हिसाब कर दिया उन्होंने. But because she approached him like a mother, then she got a position of mother in the spiritual world. Little, she did very little. You know, very little lens से देखने के बाद very little हमें करेगा तो हमें तो very little नहीं नजर आएगा. But Krishna saw that little part. Oh, she approached favorably as a mother. So she did. What did she got? She got into spiritual life. Like this. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी एक जो वो फल वाली गई थी कृष्णा के पास. फल वाली भी गई थी. Yes, माता जी. तो वो जो उन्होंने थोड़े से फल दिए थे और कृष्णा ने वो बहुत ज्यादा दे दिया था. हाँ, थोड़े से फल दिए थे और उन्होंने मुझे ऐसे मथुरा के तो बड़े सारे एग्जाम्पल है माता जी. हरे कृष्ण. मुझे धोबी था जिसने कपड़े दिए, you know, like that. So many, somebody gave garland.
द मथुरा वाले तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं जहाँ they did little service and they got so many. हरे कृष्ण प्रभु जी, वन एग्जांपल फ्रॉम महाप्रभु प्रकाश लीला. जब वो प्रकाश लीला करते हैं तो देयर वाज वन लेडी हु वाज टेकिंग वाटर फ्रॉम आउटसाइड and somehow Mahaprabhu put glance on that lady and he asked who is this lady. So I think Srinivas says ki she is Dukhiya, she is bringing water. Then Mahaprabhu says ki now she will be Sukhiya, she will remain happy, Sukhi. I think she was liberated. So just by doing little services she gets Mahaprabhu's glance and then she gets liberation or she goes to her. Yes. So like that, because जो भी आप भगवान की सेवा में करते हैं, ये एग्जाम्पल पुरानों में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आपको बताने के लिए कि ये सिर्फ हमें एनकरेज करने के लिए नहीं है, बल्कि जो भी सेवा आप भगवान के लिए करते हैं, जैसे हम फेवरेबली अप्रोच करते हैं कृष्ण को, देन इट कम्स इन आवर परमानेंट अकाउंट एंड ही नेवर फॉरगेट्स एनी सर्विस डन, ही नेवर फॉरगेट्स. कोई आप में से कोई वीडियो बना रहा है प्रभुपाद के, कोई उसकी ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है शौर्य, कोई उनके कोट्स भेज रहा है, कोई उनके फेसबुक पे लाइक्स करा रहा है, कोई उनको आगे भेज रहा है, कोई भगवत गीता की क्विज डाल रहा है. ऑल दिस थिंग्स दे आर टू योर परमानेंट अकाउंट. ऑलवेज रिमेंबर, ये सारे आपके परमानेंट अकाउंट में, जैसे वो गिरते हैं सिक्के आवाज आती है ना, टन टन टन, तो ऐसे देखिए टन टन टन, आपके अकाउंट बढ़ता जा रहा है. ये भक्ति उन्मुखी सुकृति is increasing because knowingly we are doing it, not unknowingly. It is not agyat sukriti. Knowingly we are doing it. We are doing it for the pleasure of Prabhupada, for the pleasure of Chaitanya Mahaprabhu, for the pleasure of Krishna, like this. So knowingly we are doing. और जो लोग सेवा कर रहे हैं, कोर्स बना रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, कोई कुछ बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, all is getting to permanent. उनका जो है, जो भक्ति का जो उन्मुखी जो सुकृति है, वो परमानेंट बढ़ती जा रही है. और अंकिता माता जी कह रही हैं, वो जो गिलहरी थी जिसने भगवान राम का ब्रिज बनाया, यस, उसमें पत्थर रखे छोटे छोटे, वो गिलहरी, एंड कंपेयर टू द मंकीज, एंड लॉर्ड राम सेड यस, द सेम सर्विस एज द. थैंक यू माता जी. सो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हम देख सकते हैं. लिटिल सर्विस एंड कृष्णा रिकॉग्नाइज्ड इट इमीडिएटली. आगे पढ़ते हैं. There is a nice verse in connection with Srimad Bhagavatam 157. त्याक्त्वा सा धर्मम चरना भुजम हरेर भजन अपक्वो अथा पतेत ततो यदि यत्र क्वा वा भद्रम आभूत अमुष्य किम को वाथा आपतो अभजतम स्वधर्मता. If someone gives up his occupational duties and work in Krishna consciousness and then falls down on account of not completing the work, what loss is there on his part? And what can one gain if one perform his material activities perfectly? Or as the Christian says, what profit a man if he gains the whole world yet suffers the loss of his eternal soul? तो भागवतम का श्लोक है, देखिए क्या कह रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने जो है अपनी जो सारी जो ड्यूटीज हैं, जो अपने जो कर्तव्य हैं, as in varnashram we have different duties, अगर वो हमने ड्यूटीज नहीं की और पर भगवान की भक्ति की, और उसके बाद अगर वो गिर जाता है, भक्ति पूरी नहीं कर पाता और किसी कारणवश बुरी संगत में आके कैसे भी गिर जाता है, then what is a loss? Because there is no loss, because whatever little he has done is to his account. And दूसरा क्या है, what one gains if one perform material activities perfectly but doesn't do bhakti. कि आपने सारे अपने रोल तो आपने सारे पूरे निभाए, पिता के, पुत्र के, पत्नी के, बच्चे के, जो भी थे आपने सारे निभाए, बट भगवान की भक्ति नहीं की, then what is the gain? There is no gain. You not gain because आप उसी संसार के जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चंबल में फंसे हैं और तीनों मोड़ से फंसे हैं, और आप गेम जो है कभी ऊपर कभी नीचे हिंडोले की तरह घूम रहे हैं. There is no gain. You are still stuck in the same thing. कभी गद्दे वाली सीट मिल गई, कभी लोहे वाली सीट मिली, कभी झटके कम लग रहे हैं, कभी ज्यादा लग रहे हैं, बट आप उसी हिंडोले में घूमते जा रहे हैं. You are in the same circle, stuck without realizing. There is no gain. Shramevai kevalam, only effort, no benefit, no spiritual benefit. आगे लिखते हैं, material activities and their results end with the body. जो हमने शुरू में डिस्कस किया था, so this is the point which I was discussing, asking all of you, कि material activities and their results end with the body.
but work in Krishna consciousness carries. इसीलिए जो देवी देवताओं से बोन मिलते हैं, they are also temporary. They are themselves temporary, and the boons also they gave you is temporary. इस जन्म में मिलेगा, but it has no spiritual value. But work in Krishna consciousness carries a person again to Krishna consciousness even after the loss of the body. At least one is sure to have in the next life being born again as a human being. देखिए, ये आप में से किसी ने कुछ I think टिप्पणी की थी या पूछा था, कि one is sure, अगर आप भगवान की भक्ति करते हैं, sincere रूप से करते हैं, then the least you will get is to be sure that you will get a human body. और वो कैसे मिलेगी? 6.41 या 6.42 के हिसाब से, either in the family of a great cultured Brahman, or a rich aristocratic family that will give one a further chance of elevation. That is a unique quality of work done in Krishna consciousness. So, जैसे मैंने आपको कल बोला था कि हम लोग अभी 10 मिनट हैं, I think we'll be able to read. So I will open on the screen share. Where is it gone? Yeah. You can read through me. So I will read it. This is from a purport of a lecture of Prabhupada on 2.40. So मैं पढ़ता हूँ. अब ये जो कोट है, ये लेक्चर में से नहीं है, बल्कि ये जो कोट है, ये प्रभुपाद दे रहे हैं कृष्णा बुक में से. ये कृष्णा बुक में से कोट किया हुआ है. ये तो इसमें से जो कोट है मैं पढ़ रहा हूँ, जो पोर्शन कृष्णा बुक से पढ़ रहे हैं, जिसमें प्रभुपाद यही जो श्लोक है, ये कोट करते हैं. तो उसका रेफरेंस क्या है वो बता रहे हैं. After this, all the residents of Vraja cut the gigantic body of Putana into pieces and piled it up with wood for burning. When all the limbs of Putana's body were burning, the smoke emanating from the fire created a good aroma of agaru. This aroma was due to being killed by Krishna. This means that the demon Putana was washed of all sinful activities and attained a celestial body. So एक राक्षसी है जो बच्चों का खून पीती है. आप देखिए कि she is a blood sucking or blood drinking, witch who kills children and क्या बोलते हैं, मतलब वो जो witch को क्या बोलते हैं हिंदी, witch जो भी बोलते हैं, चुड़ैल. So जो चुड़ैल है तो बड़ा हैवी सा वर्ड लगता है चुड़ैल. So वो जो एक witch है या चुड़ैल है जो बच्चों को मार के उनका जो रक्त है वो पीती है. अब वो देखिए वो कितने बच्चे मारे उसने, और कहीं ऐरी गैरी जगह नहीं मारे, वो जाके ब्रज के अंदर भी मारे उसने, जो ब्रजमंडल है, because she was looking for Krishna, so she killed. और देखिए क्या हुआ कि क्योंकि भगवान के हाथों मृत्यु हुई, तो क्या है कि जो मृत्यु शरीर भी है, जब उसको भी जलाया गया तो उसमें से अगुरु की स्मेल आ रही. अगुरु इज द स्मेल ऑफ कृष्ण. Krishna's body smell of aguru. So this is the, देखिए what she received just by, अभी पढ़ते हैं आगे. Here is example of how the supreme personality of Godhead is all good. Putana came to kill Krishna, but because he sucked her milk, she was immediately purified, and her body attained its transcendental quality. Her only business was to kill small children, and she was only fond of blood. So आप समझ सकते हैं कितने पाप किए हैं उसने, देखिए कि छोटे बच्चों को मार के, and she was fond of the blood. आप सोच सकते हैं कितने पाप हैं, देखिए. But in spite of being envious of Krishna, she attained salvation because she gave her milk to him to drink. So what can be done? What can be said of those who are affectionate to Krishna in relationship of mother, who with great love and affection always serve him, the supreme personality of Godhead and the super soul of every living entity. So अगर she is being so unfavorable, और जो भगवान के भक्त हैं who do it favorably, तो कह रहे हैं कि जब उस चुड़ैल को ये गति मिली, तो जो भक्त हैं, you can understand what is in store for the devotees of the Lord. जो ठाकुर जी की रोज सेवा कर रहे हैं और चाहे छोटे बच्चे की तरह उनको नहलाते हैं, धुलाते हैं, उनकी ड्रेस चेंज करते हैं, उनको भोग लगाते हैं,
So they are doing so favorably, so we can understand what is in store for devotees. आगे लिखते हैं प्रभुपाद, it is concluded therefore that even a little energy expended in the service of the Lord gives one immense transcendental profit. Bhakti, bhakti unmukhi sukriti. This is explained in Bhagavad Gita. So alpam ape asya dharmasya trayate mahato prayat. जो आज का श्लोक है 2.40. फिर आगे प्रभुपाद लिखते हैं, devotional service in Krishna consciousness is so sublime that even a little service rendered to Krishna, knowingly or unknowingly, gives one the greatest transcendental benefit. The system of worshipping Krishna by offering flowers from a tree is also beneficial for the living entity who is confined to the bodily existence of a tree. जो पंचरात्रिक विधि है जिससे हम जो अर्च विधि करते हैं या जो deity worship करते हैं उसके benefit बता रहे हैं. देखिए, when flowers and fruits are offered to Krishna, the tree that bore them also receives much benefit indirectly. The archana process or the worshipping procedure is therefore beneficial for everyone. Okay, there is another lecture Prabhupada gave where he quoted this same verse. So we have 5 minutes, we'll try to read it. While lecturing on Srimad Bhagavatam in Mayapur 1976, Srila Prabhupada referred to this verse. When someone in the material world offers obeisances before the deity, don't think it is useless. It is taken into account. Therefore, Krishna advises, if you cannot do anything else, then do only these 4 things. Mana, bhava mad bhakto, madhyaji maam namaskuru. At least come before me just like we do. We come into the temple, offer our obeisances. It is so easy to go back home, back to Godhead. क्या कह रहे हैं प्रभुपाद? It is so easy to go back to Godhead. It is not at all a difficult task. If you cannot do anything, if you cannot read books, if you cannot understand the philosophy, if your behavior is not up to the standard, you're not cultured like me, then still, if you simply offer your obeisances before the deity, you will undoubtedly make spiritual progress. Bhakti Rasamrita Sindhu, you will find that if you come to the temple and offer obeisances, and just like these boys, if you play the mridanga and cymbals and dance, then every item of this worshipping method is taken into account. It is not that it is futile. That is Krishna consciousness. That is Bhakti Marg. Swa alpam api asya dharmasya trayate mahato bayar. Simply by playing the cymbal or khol or taking a little charnamrit, everything is described in nectar of devotion. And so you should read it. So Hari Bhakti Vilas also and Nectar of Devotion also explains that all these things have immense spiritual benefits when we do. Foolish persons, foolish persons do not care for these things. They think that they are very much advanced, so they have no need to attend arti or play mridanga or cymbals. But that is not a fact. So many items are given by the acharyas. If not this, you do this, you do that, you do that. Hundreds of items. Take any one of them and you will be benefited. This is Archana Marg. There are many foolish persons who make propaganda. There is no need of going to the temple. That is another rascal dumb, because if you come to temple, you will get so many facilities to make advancement in spiritual life. This is our mission. We are spending so much money for opening gorgeous temples. This is not a new thing. This is a very, very old practice coming down by the parampara systems. There are many thousands of old temples in India, even 3,000 or 5,000 year old. Why? The acharyas wanted to give facility to the common man to enter the spiritual life. That was the idea. कह रहे हैं कि मंदिर जाने से भगवान की अर्च विग्रह के सामने दंडवत करने से, थोड़ा सा चरणामृत लेने से, भक्तों के साथ जरा सा फेवरेबल होने से कि हम we make immense spiritual progress. और अब देखिए ISKCON के अंदर Prabhupada has made all arrangements for us. Everything. We go attend the Mangal Aarti, we do this, और धीरे-धीरे then we learn to we absorb the culture just by watching others. जब आप सबका एक्सपीरियंस रहा होगा, हमें किसी ने नहीं बताया था दंडवर्स ऐसे करते हैं, पर जब हम मंदिर में देखते थे सब दंडवर्स कर रहे हैं, and then suddenly something comes to our house. I can also do it. Paramatma inspires. Do it. You know.
So many things Paramatma ji inspires. Okay, do this. So difficult to get up early in the morning. Then gradually we see, oh, it's not so difficult. पहले 8 बजे, फिर 7 बजे, फिर 6 बजे, फिर 5 बजे. And sometimes when we go in the retreats and all, we have to get up early morning, 4 o'clock, 3:30. A little anxiety, but we are able to do it. Paramatma ji inspires. Because Krishna becomes so happy that after so many millions of births, we have finally, turned our face towards him like this. So it has many benefits. So इसीलिए जो भगवान की भक्ति है, जो ये श्लोक है, ये क्या बताता है कि जो भगवान की भक्ति है, it has infinite spiritual benefits and they are all permanent. और प्रभुपाद जी से हमने पढ़ा इस लेक्चर में प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि it is not very difficult to go back to God. He's right. It is not. No, I should not say it's right, but it is not very difficult. What is difficult is to get that determination, to get that enthusiasm. वो उसका enthusiasm, वो determination, वो कहाँ से लानी है? वो आएगी भगवान के संग, भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करने से. So we did this verse today. It's already 8:30. So I think we have churned it enough for today. मुझे लगा था 2.4041 दोनों कर लेंगे, but we could churn. So if anybody has any question or comment, then please share. As we'll end the class now. I'll try to end the class by 8:30. I thought I'll be more strict with my discipline. So no more questions. So thank you. So we'll end the class now. Namo Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Dev Gauravani Pracharini Nirvishesha Shunyavadi Pashat Deshitarine Jagadguru Srila Prabhupada Ki Jai. Vancha Kalpatrubhyascha Kripa Sindhu Vacha Patitanam Pavnebhyo Vaishnavebhyo. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. Thank you so much for this wonderful class.